Good afternoon, everyone, and welcome to Teenpreneur Workshop. In today's workshop, we are going to work on three powerful entrepreneurship secrets. But before that, let me ask you a very simple question. How many of you want to become an entrepreneur to make a difference in this world? Bhumi, Jayan, Stuti, Vignesh, Roshni, Shravan, Praful, super, super. How many of you want to be an entrepreneur to earn money and earn freedom in your life? Raise your hand. Bhumi, Prafulti, Jayant, Shanali, Arshada. Amazing, amazing guys. So, honestly speaking, now I became an entrepreneur 14 years back, 1st September 2010. And at the start, I was doing student training programs. I used to be a motivational speaker for student. मैं 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ काम करता था कि उनके मार्क्स बढ़ जाए. Then I started doing coaching and training for parents. Then I started doing coaching and training programs for top MNCs like TCS, Capgemini, SBI, L&T, Axis, Adani's. And then I became a coach in 2018. And right now I work with entrepreneurs. So I work with startup owners. I work with business owners. I work with politicians. I work with artists. I work with authors. I work with CXO level employees. And one common thing that I'm observing in all these successful entrepreneurs is all of them tried some kind of entrepreneurship during their teenage. So मेरे client है सूरज करके. He is the founder of Novento. It's a big IT company in New Jersey, USA. And when I was discussing with him, he said, Nitesh, जब मैं अपना 11th-12th में था ना, so मैं क्रैकर्स का बिजनेस करता था. वो दिवाली में क्रैकर्स आते हैं ना, he should do that business. I have a client, Pratap Iyer. He is India's top SAT coach. When he was in his college, he used to work part-time. I have Kavya. She is a founder of Kalanika and India's #1 anchor. She used to assist her mother who used to sell saris. And today they have got a big brand called as Kalanika. So common thing I observed with all entrepreneurs is कि ये लोग ना अपने पढ़ाई के साथ साथ entrepreneurship भी try कर रहे थे. And today I am going to give you three powerful secrets which will help you experience entrepreneurship right in this phase. Okay. So before we go further, let us start with the first activity called as, write down everyone, Success Tower. Your Success Tower. Okay. Now in this activity, I need your parents with you. Okay. At least try to get one parent. If there are no parents, do it alone. But if your parents are there, the chances of you winning the game is much more higher. Okay. So here is activity, guys. I have told you to get some old newspapers or A4 size 10 sheets. Show me those papers, please. Show me those papers. Praful, very good. Jayant, very good. Bhumi, very good. Stuti, very good. Arya, very good. Rehan, amazing, amazing. Okay. Now show me a sellotape. Jayant, I will take the questions at the end, please. Sellotape. Everybody show me a sellotape. Very good. Very good. And you would require a scissor. Okay, that's it. Chalo. So the activities, I will explain you the game for 1 minute and then I'll give you 5 minutes to play the game. The activity is very simple. Using the old newspaper and the sellotape, you have to build the tallest tower. एक टावर क्रिएट करना है आपको, जिसका टावर सबसे टॉल रहेगा, that teenager will win. You can take help of your parents, you can take help of your siblings while doing this. Okay, but remember the only rule is you can use the sellotape to stick the paper
बट सेलो टेप से पेपर को ग्राउंड पे चिपकाना नहीं है. द टॉवर शुड बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन. आर यू विथ मी? Everyone, rule is clear. Let me ask one person to explain the rule again. Madhura, Madhura, एक बार rule explain करो. We'll have to make a tower which is highest and we are not going to stick it to the ground. We have to stand it on. वो अपने खुद से खड़ा होना चाहिए. And the total time given to you is 5 minutes. Let me start the timer. You can take help of your parents. Your time starts now. Go for it. 5 minutes. Try to create the tower on the ground. Ground पे create करो उसको. 5 minutes. Stop, everyone. Stop, stop. Time is up. I've given you already 1 minute extra. Chalo, now let me interact. So let me talk to Jayant first. Jayant, unmute yourself. Yes, sir. Jayant, how tall is the tower? About now 8 feet. I think about 3 feet. 3 feet. Is it standing on the ground or is it standing on the bed? On the bed. On the bed. So it is around 2.5 to 3 feet. Very good, Jayant. Good work. Who wants to show? Praful, एक बार दिखाओ. सर वो एक्चुअली टावर गिर गया. गिर गया. Very good, very good. That's the learning, Praful. Okay, who else would like to show? Amit Shah, how long is the tower? It's not standing on the ground, but it's approximately my height. Very good. But the rule is it should stand on its own. Yeah. I will explain you the rule. Thank you, Amit Shah. Who else? Madhura, unmute karo. It's actually, it was standing a minute before and now it's not. Sorry. Very good. Very good. See, this is a very strong learning about business. I'm going to share that. So, Madhura, तुम्हारा tower tall बना है. It is more than 6-7 feet tall. But वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, right? Very good. There's a learning behind it. Bhumi, show me. My tower is around 1.5 feet, but it's standing on the bed. It's not standing. Very good. Very good, Bhumi. Anybody else would like to show? Okay. Chalo. Now let us come to the learning part. Good part, Suti. Chalo. So let me talk to... Yeah, Stuti. Very nice. How long is this? Unmute karo, please. This is about, I think, 3 feet. 3 feet and it is standing on its own, right? Yeah. Very good, Stuti. Very good. Chalo. So the winner of this activity is Stuti and Jayant, followed by Bhumi. Okay. Now, congratulations to all the winners. And now the learning. What is the learning? Who would share what is the learning behind this? Jayant, बताओ क्या learning है इसमें? So basically in this, we need to have a strong base to lay the foundation of our Very entrepreneurship. good. Very good. See, most of the time. Yes, Praful. सर कभी कभी मतलब हमारा बिजनेस नहीं चलता तो हमें उसे वापस खड़ा करना पड़ता है, जैसे हमने इस टावर को भी किया था. Very good. Very good. So guys, thank you, Praful. The most important learning is before you build the height of the tower, build the foundation strong. बहुत सारे बच्चों ने क्या मिस्टेक किया मालूम है? वो लोग ना टावर की हाइट पे काम करने लग गए by folding it. Now, this is what lot of entrepreneurs do. They start working on the business idea. They start working on sales. They start working on the website. They start working on creating the product and service. वो सब बाद में आएगा. उसके पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ. हैव यू सीन बुर्ज खलीफा, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग है?
उसका फाउंडेशन कितना डीप है. They have worked 3 years on the foundation and then they have built the tallest building. What does it mean for you? See, ये जो teenagers का year है ना, teen years, write down this somewhere. Age 11 to age 19 are your foundation years. Age 11 to age 19 are your foundation years. ये एज में ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दो. Do very good in your academics. Learn lots and lots of extracurricular activities. Be with good friends. ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है. सी टाइम पास करने वाले फ्रेंड्स तुमको लाइफ में कभी भी मिलेंगे. ये टाइम पे ना ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो जिनको सच में कुछ बड़ा करना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, you know who is the most important part in your foundation? Your parents. Your mom, your dad, they are the most important part of your foundation. If जैसे ना आज would you agree जिनके पेरेंट्स ने हेल्प किया ना, they were able to build it properly. स्तुति, would you agree? पेरेंट्स ने हेल्प किया तुमको Yes, sir. and it helped. अगर तुम अकेले करती तो छोटा टावर बनता, बट पेरेंट्स ने हेल्प किया तो अच्छा टावर बना. Yeah. राइट. थैंक यू सुति. नाउ दिस इज द सेम केस इन लाइफ. बहुत बार क्या होता है, मतलब हम लोग ना पेरेंट्स हम लोग कुछ बोल रहे हैं ना, इसलिए हम लोग गुस्सा कर जाते हैं. हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये मुझे नहीं सुनना है. दे आर ऑलवेज बिहाइंड मी एंड माई स्टडीज एंड माई मार्क्स. कैन एनीबडी टेल मी why your parents are behind you that you should do good in life? What is their intention? Anyone would like to try? Why your parents keep on telling you पढ़ाई करो अच्छे मार्क्स निकालो, टाइम पास कम करो? What is the reason behind it? Yes, Bhumi. Sir, I feel that our parents, जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है, तो हाँ. उनको they might have experienced something, my mom, she still regrets that she had a chance of going into medical and she did not go. So she Very good. encourages me that, if you're getting some opportunity in the field of education or in life, do not let it go. So But भूमि मतलब क्यों कर रही है मॉम ऐसे? तुम्हारे साथ ही क्यों कर रही है? अच्छा, उनको ये Because- मालूम भी है कि कभी कभी वो ऐसा करते हैं ना, तुम गुस्सा हो जाती हो. she knows that sometimes I do get frustrated, I do shout at her, I do yell at her, So my question because- is, why is she Yeah. doing this? because she wants Why? me to see she wants to see me successful Why in she life, wants you to be successful? because I can be happy, contentful, Why she wants you to grateful, be happy? Very, because- very deep question. yeah. Think. um, Shahan? हाँ शाहान बोलो. Yes, sir. I was showing the tower. No. The tower activity is done now. I'm asking the question, why your parents keeps on telling you study. Yes, Jen? Because Yes, sir, they want us to be successful and they want us to Why? grow and do something good in our lives. Why they want that? Because if we do something good, So, thank you, Shahan. Yes, Yes, Jen. so like our parents, like they want us to be successful. They want to see us happy in a life. They want to have us a Why? bright future, Why they want that? so that we can have a peaceful life. Why they want you to have a peaceful life? चलो लास्ट प्रफुल. सर जिससे हम लोग वर्ल्ड में आवाज गया प्रफुल आपका, नहीं सुनाई दे रहा है. सर जिससे पूरी दुनिया का थोड़ा अच्छा हो, मतलब सारे लोगों Why? उसके पीछे का why क्या है प्रफुल? सर सारे लोगों को हेल्प करना, क्योंकि तो नॉलेज एक सर, तो आपके पीछे क्यों पड़े? बाकी बच्चों को क्यों नहीं बता रहे पढ़ाई करो? आपको ही बोल रहे हैं ना पढ़ाई करो, आपके कजिन को, आपके नेबर को नहीं बोल रहे वो. चलो, आई टेल यू द आंसर गाइस, लिसन टू दिस केयरफुली. और ये आंसर आपको कोई नहीं बताएगा. लिसन,
The reason that your parents are behind you, बेटा पढ़ाई करो. The reason that your parents are behind you, बेटा कुछ लाइफ में बड़ा बनना है, बेटा टाइम पास का मत करो. And while doing this, they get into argument, they get into fights, they get into anger. The only reason behind all this is your parents love you. The problem is they cannot tell you I love you like this. तो उनका I love you क्या है मालूम है? पढ़ाई करो, अच्छा कुछ करो, एग्जाम में मार्क्स निकालो, ये वाला हॉबी करो, learn this extracurricular activity, participate in this competition, don't talk to that friend. See, they don't know. ये जो शाहरुख खान वाला I love you होता है ना, वो गाना गाते गाते I love you बोलता है, वो टाइप का I love you बोलने को आता नहीं उनको. उनका I love you is making sure that you are always on the right path. And trust me, as a coach, I am telling you, life में जितना प्यार तुम्हारे पेरेंट्स तुमको करेंगे, उतना प्यार दुनिया में कोई नहीं करेगा. अभी तुम लोग बड़े हो जाओगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद, you will have a boyfriend, you will have a girlfriend, then you will get married. All these people will love you, but the level of unconditional love your parents will give you, you will never get it from anywhere else. So my request is always be with them. Always respect them, always listen to them. Even if they are angry, understand why are they saying all this? What is their intention? And if you understand their intention, that intention is pure love and nothing else. Are you with me? Okay. So secret number 1 of entrepreneurship is build a strong foundation with your core team, and your core team are your parents. Okay. Secret number 2. Now for this secret, now I need to interact with some parents. Hello, Hi, sir. Vada. Hi, what's Hi. your name? Deepika. Deepika, आपके पापा क्या करते थे? My father was a civil engineer. सिविल इंजीनियर, वेरी गुड. एंड आपके पापा ने वो सिविल इंजीनियर का जॉब कितने साल किया? Around 40, more than 40 years. More than 40 years. Very good. Remember everyone now, Stuti's grandfather did a job for 40 years. Jayant's mom, hi, what's your name? Yeah, I'm Babita. Babita. Yeah. Babita, आपके पापा क्या करते थे? As a central government employee. Very good. Now, as a central government employee, how many years he spent in that single job? He spent almost 40-45 years. So, for the entirety of his career, he was in the Yes. same job, Yeah. right? Remember this point. Thank you. Yeah. Udantika's mother, hi, Hello. what's your name? My name is Hamsini. Hamsini, Yes. what did your father do in My his father career? was working in a national bank. National Bank. How many years? Around 40 years, yes. Around 40 years. So all the teenagers ask your parents कि उनके पापा मम्मी ने कितना टाइम एक जॉब में निकाला, and the answer is, thank you. The answer is that your grandparents have done this thing. One job, one career for the rest of their life. सब लोगों के दादा दादी ने ऐसे ही किया है, एक ही जॉब किया, एक ही करियर किया for the rest. Okay, now let me ask about your parents. So let me go back to the same people. Stuti's mom. आप जॉब करते हैं? Sir, I'm a playgroup teacher. Very good. अभी आप ये करियर एक ही जगह पे कर रहे हो, that you have worked with different companies? Actually, sir, I recently joined. Before, I was a homemaker. Very good. Very good. Now Stuti's father क्या करते हैं? He's an MD rheumatologist. Very Is good. Superb. So he's a doctor. Amazing. Let me talk to और कौन था जिससे मैंने बात किया था? Udantika and हाँ, Udantika's mom, do you also work? No, I'm a housewife. What is Udantika's papa does? He's a software engineer. Software engineer. Now, would you agree that he has been working in the same career but different jobs? Yes, yes. He must be switching after 4 or 5 years. Yes, yes. He has switched 3-4 times. है Yes. ना? Yes. Superb. Let me take one more example. So if you ask this question to your parents ना guys, you will realize कि अपने दादा दादी ने ना एक ही करियर में पूरा टाइम बिताया. अपने पापा मम्मी क्या कर रहे हैं मालूम है? अपने पापा मम्मी ना
एक करियर मतलब वो आईटी में है तो आईटी में है, वो मैन्युफैक्चरिंग में तो मैन्युफैक्चरिंग में है, वो टीचिंग में तो टीचिंग में है, बट दे हैव डन मल्टीपल जॉब्स, बट द करियर इज सेम. आर यू विथ मी एवरीवन? नाउ यू हैव टू आस्क कि आप लोग को क्या करना है. सो लेट मी आस्क दिस टू द टीनेजर्स. Let me ask this question to Jayant. Jayant, Yes, sir. can you do the same job for 40 years? No, sir. Can you do the same career for 40 years? No. Would you agree that in your adulthood you would like to try new things? Yes. Udantika, would you like to work in the same job for 40 years? No. Can you see yourself doing the same job, same career, but different jobs for next 40 years? Maybe. Thank you. Now listen to this carefully, guys. This is very, very powerful for the parents as well as the teenagers. ये ना अपने दादा दादी का फेस था, वन जॉब वन करियर. ये अपने पापा मम्मी का फेस था, मल्टीपल जॉब्स बट इन सेम करियर. बट अपना फेस क्या होने वाला है पता है? अपना फेज में ना हम लोग वी वुड लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स. वी वुड लाइक टू, कभी पेंटर बनना है, कभी एंटरप्रेन्योर बनना है, कभी जॉब बनना है, कभी इन्फ्लुएंसर बनना है. And we will be doing multiple jobs or multiple career, or even more, we would like to do multiple businesses. Are you with me? This is where the next generation will go. Now, let me ask this question to somebody's mom. Stuti's mom. Yes, sir. अगर मुझको एक ही करियर 40 इयर्स करना है, देन आई नो ना कि वो करियर के लिए मुझे क्या एजुकेशन करना चाहिए. Right. तो फिर मुझे आइदर इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है या अकाउंट्स करना है या इकोनॉमिक्स करना है, राइट? एंड आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ. बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू डू मल्टीपल करियर्स, देन कौन सा कोर्स करना चाहिए मुझको? Multiple business हाँ, बट कौन सा कोर्स, उसके लिए कोर्स कौन सा है? course करना. You have to try multiple workshops and different courses. वेरी गुड. रिमेंबर दिस गाइस, जब आपको जॉब करना है ना, सेम जॉब 40 इयर्स, देन यू फोकस ऑन द कोर्स. But if you want to do multiple things in the future, then focus on yourself. Focus on your development. Focus on your growth. अपने आप को ऐसा prepare करो that in the future you can do multiple things. You can do sales also, you can do design also, you can do public speaking also. And this is the reason ये teenage life बहुत important है. बिकॉज जो मेरे पास आज क्लाइंट आते हैं ना, उनमें से कुछ लोग डिजाइन में बहुत अच्छे हैं बट उनको बात करने को नहीं आता. तो फिर मैं उनको 6 महीना कम्युनिकेशन का कोचिंग देता हूँ, फिर मैं उनको 6 महीना सेल्स का कोचिंग देता हूँ, फिर मैं उनको 6 महीना पैसों का कोचिंग देता हूँ. माई रिक्वेस्ट टू यू गाइज इज, बिफोर यू फिनिश योर 20 years, learn multiple things. Learn designing, learn public speaking, learn business, learn how to do sales, learn about finance, because this will prepare you for the future. Not a single course. And to be very honest, यूएस में ऐसा होता है. यूएस में ना, they believe in holistic growth. They teach you academics also, they teach you skills also, they teach you public speaking, they do projects, everything. Okay? So remember this, secret number 2, your focus should be on multiple things. एक ही चीज, सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होके ना is not enough, guys. You have to prepare yourself on multiple things. Now, what multiple things you should prepare? उसके लिए ना, I'm going to share a very powerful formula. This is called as career selection 3 jar method. ये मैंने खुद इन्वेंट किया है. Everybody please mute. ये मैंने खुद इन्वेंट किया है, called as 3 jar method for career selection. This basically gives you the difference between what is a job, what is a business, and what is entrepreneurship. Okay? तो मैं अभी आपको ना 3 जार दिखाता. This is a job wala jar. Now remember, chocolates is the message for happiness, and money is the message for
सक्सेस। सो ये जॉब वाला जा रहा है गाइस, ध्यान से देखो और देखो क्या मैसेज मिल रहा है तुमको इसमें से, क्या सीक्रेट पता चल रहा है। ओके, दिस इज वन जॉब, देन दिस इज बिजनेस। And then this is entrepreneurship. So we'll try to show you all three together. ये जॉब है, ये बिजनेस है, ये entrepreneurship है। Chocolates signify the happiness in your life, and the money that I have put is signifies the success in your life. Okay? देखो अच्छे से और बताओ इसमें क्या तुमको मैसेज मिल रहा है, क्या सीक्रेट पता चल रहा है। चलो, who would try? चलो, let me work one by one. Guys, Zoom वाले हाथ मत करो, एक्चुअल हाथ ऊपर करो, only then I'll understand. Let me talk to Ishan. हाँ ईशान बोलो। Sir, in job, we stay happy, but we don't get that much money. Very good. And in business, we हाँ, get money also, we get success also, and we stay happy also. But in entrepreneurship, we don't know anything about anything. very good. Very good, Ishan. Very good answer. So let me try one more. Aks. No, Aks नहीं। रेहान आप ट्राई करो। In a job, most people are enslaved by money. They are after money, they are not after the development they are looking for. They stay in the same job for years and years because that's what their bloodline has been carrying. Okay. In a business, you more like work with other people. You make the money and you get the happiness as well because you have built that business. In a job, there are multiple people doing So the what is same. the difference between the business and entrepreneurship? ये मैंने ऐसे अलग अलग क्यों दो जार बनाए? Entrepreneurship is more of based on everything. It is based on business, networking, नहीं convincing. रेहान, तुम्हारा पहला जॉब बिजनेस का ठीक था, ये वाला तुम मिस्टेक कर रहे हो। चलो लेट मी गिव समवन एल्स। थैंक यू रेहान। भूमि। Hello. Yeah, हाँ can you भूमि hear me? बोलो। Yeah. Yeah, so in entrepreneurship, I feel that everything is very unexpected. You are like, as you told, we have to focus on different things. So in business, I don't feel that you have to focus on a lot of different things like we have to do in entrepreneurship. Because in business, you already have a lot of people working for you. So, you know, everybody is categorized into doing their specific work. So you don't have Very to take good. care of everything. But in entrepreneurship, when you're starting something and it is very new, you have to take care of everything. You have to make sure that everything is top notch. Amazing Bhumi. And it is Very good very answer. unwavering that time. Like you Super. don't know what is going to happen. Super Bhumi, good answer. चलो guys, let me explain. Now let us come to job. पहली बात तो job, business, entrepreneurship कोई भी अच्छा कोई भी बुरा नहीं है. Remember induction में मैंने बोला था, job is also good, business also good, entrepreneurship also good. You should select what you are matched with, what excites you. Job में ना सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मालूम है गाइस, कि ना जैसे तुम्हारा पढ़ाई खत्म हुआ, तुम्हारा पे चेक चालू हो जाता है. At the age of 21, you can start earning. So if you join a good company like TCS, company will pay you 4.5 lakh rupees. मतलब at the age of 21, 22, तुम्हारा सैलरी आएगा 30,000 का. ओके, तो तुम्हारा हैप्पीनेस भी चालू हो गया. तुम्हारा स्टार्टिंग में थोड़ा कम सैलरी होता है, बट तुम 10 साल 20 साल स्पेंड करोगे, बाद में सैलरी बढ़ जाता है. ओके, दिस इज जॉब. देन कम्स बिजनेस. बिजनेस में ना समथिंग विच इज ऑलरेडी सेट, पापा ने कुछ बना के रखा है, या फिर एक नॉर्मल बिजनेस जो सब लोग कर रहे हैं.
जैसे एक शॉप खोलना, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना, कोई ट्रेडिंग एक्सपोर्ट करना। बिजनेस में क्या होता है कि अगेन थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, जॉब में ना बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। कंपेरेटिवली बिजनेस में 3-4 साल सेट होने के लगते हैं। बट जब सेट होते हैं ना, तो इसमें तुमको मेलोडी मिलेगी, पार्ले जी मिलेगा, इसमें तुमको ट्रफल मिलेगा, हर्षी मिलेगा, गिरियानी मिलेगा, एंड अगर इंटरनेशनल बिजनेस हो तो डॉलर्स मिलेंगे। बिजनेस में ना रिस्क है और उसका रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलेगा। बट रिमेंबर इट टेक्स टाइम, एंड एज भूमि राइटली सेड, उसमें टीम टीम चाहिए रहता है, उसमें डिपार्टमेंट चाहिए रहते हैं। इट टेक्स टाइम। ये वाला जो डिब्बा है ना, ये ना पूरा का पूरा सरप्राइज पैकेज है। यू डोंट नो इसके अंदर क्या है, एंड ट्रस्ट मी, किसी को भी नहीं मालूम है इसके अंदर क्या है। जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं ना, फॉर देम दे डू इट बिकॉज पॉइंट नंबर 1, दे आर पैशनेट अबाउट समथिंग, दे लव डूइंग समथिंग। जैसे ना गाइज, अभी ये 14 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। जब मैंने 14 साल पहले 2010 में चालू किया था, और मैं किसी को बोलता था ना मैं कोच बनने वाला हूँ, तो मुझको मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कौन सा कोच, क्रिकेट का कि कबड्डी का। कोचिंग नाम का एक फील्ड होता है, बिजनेस कोचिंग कर सकते हैं, टीनेज कोचिंग कर सकते हैं, ये लोगों को मालूम ही नहीं था तभी। एंड फॉर द फर्स्ट 8 years मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं तुमको मेरा एक्चुअल जर्नी दिखाता हूँ। तो पहले पहले ना बिजनेस जब करते हैं ना, तो आपको ना पता नहीं चल रहा है, सिर्फ आवाज आता है, मतलब कुछ ना कुछ लगता है कि इसके अंदर है, इसके अंदर है। तो यू ट्राई समथिंग समथिंग समथिंग, एंड तुमको लगा कुछ तो मिला है, कुछ तो मिला है, एंड आई थिंक आई हैव गॉट सक्सेस, एंड देन यू ट्राई टू ओपन दिस, एंड बाद में पता चलता है कि दिस इज यूजलेस, दिस इज गार्बेज, दिस कैनॉट बी यूज। But then, still, since you love this, you keep on doing again, 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 again. And बहुत काम करने के बाद, बहुत काम करने के बाद, you find something which gives you happiness, which makes you feel good. फिर बहुत काम करने के बाद, slowly, steadily, you get recognition. तो जैसे मुझको ये 2017 में अवार्ड मिला था from TCS as one of their best coaches. Where then you work, then you work, then you work, and then you start making good amount of money. And if you are on the right track, then some time will come and you will receive this. But ये कब होगा किसी को नहीं मालूम। जैसे ना यहाँ पे मुझको मालूम है जॉब में कि भले ही पैसा कम मिलेगा बट मिलेगा। है एवरी 3 years के बाद प्रमोशन होगा, 20 साल के बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा। यहाँ पे मुझको मालूम है कि बिजनेस 5 साल चलाऊंगा, चलने लग जाएगा। बट यहाँ पे फेम कब आएगा, सक्सेस कब आएगा, हैप्पीनेस कब आएगा, नो आइडिया। बट पता है सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे होता है? एनीवन? जॉब में सबसे ज्यादा पर्सनल ग्रोथ होता है, बिजनेस में पर्सनल ग्रोथ होता है, कि एंटरप्रेन्योरशिप में पर्सनल ग्रोथ होता है? कहाँ पे होगा बताओ? सहज? सर एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज्यादा क्यों पर्सनल इतना ग्रोथ होगा। पेनफुल है, इतना मारामारी है वहां पे, इतने सर फेलियर्स है वहां पे। जितनी ज्यादा पेन लेंगे, जितने ज्यादा चैलेंजेस देखेंगे, उतना ही तो ग्रो करेंगे। एग्जैक्टली। सी मैं एक बात बताऊं तुमको। उस दिन ना मेरे फादर इन लॉ आए थे और फादर इन लॉ बोलते हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में कंटिन्यू करते तो आप क्या पोजीशन पे होते? तो मैंने बोला पापा, मैं ना एसवीपी होता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो आप कितना कमा लेते हो, कितना कमा लेते हैं एज ए एसवीपी इन एचडीएफसी बैंक? तो मैंने बोला पापा एक 55-60 लाख की सैलरी होती। और फिर पापा पूछते कि अभी कितना कमाते हो? तो मैंने बोला पापा ये साल आई विल क्रॉस 1.8 करोड़। तो फिर बोलते तो फिर एचडीएफसी बैंक अच्छा था ना? तो मैंने बोला पापा
इट इज नॉट ओनली अबाउट द मनी. जो मेरा ग्रोथ हुआ है ना आज बाय बीइंग हियर फॉर द लास्ट 14 years, मुझको आजकल डर नहीं लगता. अगर कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ रिस्क लेना है, आई हैव बिकम सो स्ट्रांग दैट आई कैन टेक एनी रिस्क. I can talk, I can convince people, I can go on a stage, I can create videos. यहाँ पे होता है ना, तो सिर्फ मुझको एक ही चीज करने को आती है, वो मेरा जॉब. बाकी चीजें करने नहीं आएंगी. So my request is all of you experience entrepreneurship during your teenage years. कुछ ना कुछ टीनेज ईयर्स में ना ट्राई करो. सी मैं आपको ना एक बहुत अच्छा सीक्रेट बताता हूँ गाइस, प्लीज लर्न दिस. सी स्कूल क्या कर रहा है मालूम है? स्कूल इज वेरी गुड, बट स्कूल इज प्रिपेयरिंग यू फॉर सर्टेनिटी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी. सर्टेनिटी मतलब क्या मालूम है? कि मुझको मालूम है क्या होने वाला है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ. लेट मी टॉक टू ऋषभ. ऋषभ, विच स्टैंडर्ड यू आर इन? नाइन्थ. ऋषभ, अगर तुमने 9th स्टैंडर्ड के सारे पेपर्स अच्छे से प्रिपेयर किए, सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर किए, डू यू नो दैट यू कैन गेट 90% देयर? Yes, sir. है ना? अभी तुम 10th स्टैंडर्ड में जाओगे, तुमने 10th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बिकॉज उसका टेक्स्ट बुक रेडी है, राइट? तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया, अच्छे से कोचिंग क्लास किया, यू विल क्रैक एग्जाम, राइट? Yes, sir. बट कैन यू से द सेम थिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप? No, sir. व्हाई? बिकॉज इसका कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, इसका कोई प्रोग्राम नहीं होता, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है. एंड सी जो तुमको स्कूल सिखा रहा है ना, सी स्कूल इज डूइंग अमेजिंग जॉब गाइस. दे आर प्रिपेयरिंग यू इन द एजुकेशन वर्ल्ड, दे आर प्रिपेयरिंग यू विथ IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन. बट रियल वर्ल्ड में ना IQ नहीं चलता. रियल वर्ल्ड में अगर तुमको सक्सेसफुल होना है तो EQ चलता है. EQ का फुल फॉर्म राइट डाउन, इमोशनल क्वोशंट. यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रांग. और जितना तुम इमोशनली स्ट्रांग रहोगे, उतना तुम ये जर्नी ऑफ एक्साइटमेंट, आइडिएशन, मार्केट चेक एंड लॉन्च कर पाओगे अपना बिजनेस. आर यू विथ मी? सो व्हाट वी आर डूइंग इन LPCC community is that we are helping you experience entrepreneurship right now, and that is what we call as Teenpreneur Expo. Listen to this carefully. This is opportunity for you to experience entrepreneurship right now. So what we are doing is, ये ना एक 2 हफ्ते का प्रोग्राम है. It is starting on 21st of January, that is coming Sunday. Coming Sunday 21st of January, तुम लोगों के ना टोटल 3 सेशंस होंगे लाइव. Session 1 will be on 21st January Sunday 7 to 8:30 PM. Session 1 में we will work on how to create your business idea. Session 2 में we will work on how to create the right product. एक right product, एक सर्विस कैसे बनाते हैं, वो होगा Monday 7 to 8:30 PM. I will be doing all the sessions live. Session 3 होगा Tuesday 23rd Jan 7 to 8:30. So basically Sunday, Monday, Tuesday, 3 दिन आपके शाम को 7 से 8:30 Zoom पे लाइव सेशंस होंगे. We will teach you how to create your own idea. अगर आपके पास एक आइडिया है तो आप लेके आओ, we will work on that. If you don't have an idea, we will help you create an idea. And then from 23rd of January till 3rd of February, you all will be given one mentor, and that mentor will work with you to create a business pitch. And that business pitch you will be presenting on 4th of February at Geo World Convention Center. So this looks something like this. So I'll explain you the first intention of doing this program. इसका मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ guys. हाँ. So the main intention of doing this program is to help you experience entrepreneurship. ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला, first 3 लाइव सेशंस किए जाएंगे आपको Zoom के ऊपर.
हर एक को एक मेंटर दिया जाएगा, और फिर you will be invited to Geo World Convention Center. Now, why Geo World Convention Center? See, last month, in the month of December, I went to USA and attended a Date with Destiny by Tony Robbins. It was in Florida. And what I realized is कि वहां पे जो ना बड़े कन्वेंशन सेंटर में जो प्रोग्राम होता है, उसका जो एनर्जी है, that helps you think big. So what we do here is we invite you to this amazing place. This is the exact hall we have booked this time also. And यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे you guys will be working. ये आपका बूथ रहेगा. So if you observe here, ऐसे हर एक को ना एक स्टैंडी बना के दिया जाएगा, एक बूथ दिया जाएगा. You and your mentors will be there throughout. So the format is very simple. After you create your business idea, your business pitch, in the morning 9:30 से 12:30 you guys will be doing an expo. तो वहां पे क्या होगा? Parents, teachers, your friends can visit and they will register here and they will become your investors. So हर एक को ना 50,000 रुपीज का वर्चुअल मनी दिया जाएगा, और वो मनी लेके आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आएंगे and they will go through all the ideas which are getting pitched on that day. And वहां पे जो आइडियाज उनको पसंद है, सी ये वो वर्चुअल मनी है जो मेरे हाथ में है, और सबको एवरी पर्सन विल बी गिवन 50,000 का वर्चुअल मनी. एंड देन यू विल पिच योर आइडिया फॉर द नेक्स्ट 3 hours, जहां पे लोग आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको बोलेंगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कैसे कमाता है, एवरीथिंग. Trust me, it is not going to be easy. Okay, but once you start pitching your idea, जो आपका communication develop होगा, जो आपका confidence develop होगा, would be huge. So once you have started doing this in and out for the next 3 hours, 12:30 के आसपास we will close the expo. ये पिछले बार के अलग अलग ideas हैं. So if you see somebody has done idea on so I think this चेस एकेडमी के ऊपर आइडिया किया था, किसी ने योगा के ऊपर आइडिया किया था, किसी ने वर्चुअल रियलिटी के ऊपर आइडिया किया था. ये मेंटर है हमारे, शी डिड एन आइडिया ऑन टूथपेस्ट का कैप्सूल्स. ही डिड एन अमेजिंग आइडिया ऑन कैंसल योर ट्रिप. फिर हाइड्रो फ्रेश, कैसे हाइड्रोजन से और एयर से सब्जियां बनाई जाती है. अमेजिंग अमेजिंग आइडियाज थे, और ये सारे आइडियाज ये टीमप्रेन्योर्स के थे. एंड वंस द आइडियाज आर डन, अराउंड अबाउट 12:30 से 1 इन्वेस्टमेंट चालू होगा, जहां पे द विजिटर्स विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग. एंड द टॉप 7, आई थिंक लास्ट टाइम वी रेज्ड अ वर्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 65 lakhs. और उसके बाद टॉप 7 फाइनलिस्ट, जिसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रेज होगा, उनको फिर पिच करना रहेगा अपना बिजनेस आइडिया इन फ्रंट ऑफ रियल इन्वेस्टर्स, रियल एंटरप्रेन्योर्स. तो जैसे ये लोग ने, she did something called as Beyond Innovation. So see, he is an investor. She is Kavya top client. He is a big finance distributor. He is Dr. Radhakrishnan Pillai, the author of the Chanakya books. Here he is Akshay. He is also an investor and an entrepreneur. So फिर from 1:30 से 5 o'clock तक आपका पिच होगा. आपको सबको एक 10-10 मिनट दिए जाएंगे. 7 मिनट्स का पिच होगा, 3 मिनट का क्वेश्चन आंसर्स होगा. एंड इसके बाद ये जजेस आपको पॉइंट्स देंगे. हमारे प्रताप सर विल ऑल्सो हेल्प यू ऑन हाउ टू गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज अब्रॉड. बाय द वे, हिज कंपनी स्पॉन्सरिंग द इवेंट. देयर विल बी अदर स्पीकर्स एज वेल. Last time we have done a book launch, and then the top 3 participants will get cash prizes. So for example, इनका जो टीम था, गौरव और अर्जुन का, सौरभ और अर्जुन का, they won 5,000 in cash. The second prize was given to Krisha from Pune. She won 10,000 in prize. And the first one was given to Akshara. She got 20,000. And then there will be gifts and celebrations for all the participants. So this is going to happen now on 4th of February.
we do this expo twice a year. Okay, so all those who are interested, please take down Arzu ma'am's number. Arzu, please announce your number. So please note down, it's 755 852 8040. I'll type it in chat box also. You can take it from there. Okay, super. So now, what is the fees for the program? So since this program is done, अच्छा इसमें ना everything is inclusive हाँ. आपका स्टॉल हम लोग बना के देंगे. आपका प्रेजेंटेशन में आपको मेंटर हम लोग हेल्प करेंगे. उस दिन you and your parents will be also given an amazing buffet lunch in Geo Convention Center. Now the total fees for the program is 20,000 plus taxes per person. So the total fees will be 23,600 including the GST. The first prize winner will get 20,000 in cash. We will transfer the money on the same day. We will give you 10,000 for the second position. The third position is 5,000 rupees. Okay. Now there is a special scholarship for all those who have done the Teenpreneur Challenge. Okay. You remember I have told you on the first day that you have to submit the challenge on time and you will get a scholarship points. So for every challenge that you have completed in the last 7 days, for one challenge, if you have completed, you will get 1,000 ka scholarship. So if you have done 3 challenges in the last 7 days, you will get 3,000 ka scholarship. And if you have done all the 7 challenges, you will get 7,000 ka scholarship. So आपका fees होगा 20,000 minus 7,000 का scholarship, 13 plus GST. So 13 plus GST जो भी amount होगा, that your parents have to pay. Okay, so when you are enrolling to Arzu ma'am, also let her know how many challenges you have completed. Accordingly, आपका fees change होगा. अगर आपने एक भी challenge नहीं किया है, तो आपका fees will be complete. It will be 20,000 plus taxes. Is that clear? Everyone? Okay. Now why we have kept it Jio? ये बहुत important question है. See, Jio is been created by Nita Mukesh Ambani, and so let me talk to someone who has done this last time. Anybody here who was there in the expo last time? I think Arnav was here, na? Arnav, Arya. Any parent here who has participated in the expo last time? So, Manju, quickly share your experience as a parent. So, it's like when you say, when you go on a big stage, any speaker gets a shiver. And that stage was, one of the biggest platform you can give a teenpreneur to launch their brand. It is not going to be easy, I know, as Nitesh said, but the amount of people who visit you and the amount of appraisals that you get on your ideas and the investor support that you get, it is nothing short of magic. It was, I should say, the biggest platform one can get for a business idea to be launched. And Superb. that too And for a Manju, specific you candidate. and your son have traveled all the way from Chennai. Yes. For the event. Was it worth it, all the travel? It was more than just worth it, I should say. He has his exams coming up this time and he wanted to come. I said, you have your exams this time. We'll go for the next one. You finish your exams this time. So Yes. he is ready to appear for the second time. He is so much interested in Teenpreneur Expo, to be honest. Super. That was So the kind of experience he had. Amazing. Thank you, Manju, for sharing that. So last expo mein na, we have got students from Hyderabad, we have got students from Chennai, from Bangalore, from Ahmedabad, from Pune, and different parts of India. Okay, so if you are from Mumbai and nearby areas, please join. But even if you are from any other part of India, this is going to be a life transforming experience. Let me talk to Arnav. Arnav, you were there last time. Please share your experience. Arnav? Last year. Arnav, what was your experience in the expo last time? I was very nervous and I had a beautiful experience. What was your idea, Arnav? My idea was to play musical instruments.
Yes, you have created a platform where people can learn musical instruments. Yeah, sure. Yes, thank you, Arnab. Welcome. So guys, remember this. This is open. The admissions will open for you today onwards, and then we will open it to the outside world tomorrow. तो आप लोगों के पास एक दिन का एडवांटेज है. The total number of booths available at Geo Convention is 40 only. Okay, so all those who are interested, immediately approach Arzu ma'am, talk to her, and start taking your admissions. The sessions will start from 21st of Jan, that is the coming Sunday, 7 to 8:30 p.m. Okay, guys. So here is it. This was the Teenpreneur workshop. I'll quickly summarize what we learned today. We first learned the Success Tower activity, where we told you that the foundation is the core, is the main thing for your growth. In the second part, we learned about these 3 jars. And remember, although you cannot say anything, but सबसे ज़्यादा growth आपका यहाँ पे होगा. And the third one is build something, learn something where you can understand how to manage uncertainty. Once you learn uncertainty, you will be able to manage anything in your future. Okay? Super, guys. I can see a lot of you are showing interest in the expo. See you soon in the next Sunday workshop. The challenge group will be deleted tomorrow evening. Okay? Thank you very much. God bless you, everyone. See you soon.